Good evening, everyone. So today we'll discuss administrative behavior, paper 1, unit 4. Here we have leadership, policy formulation, decision making, communication, motivation, and moral. Okay. In previous year, question come from decision making, communication, motivation, and moral. No question still asked from leadership and policy formulation. In future, you might get. So policy formulation ଏଠି ବି ଅଛି and policy formulation unit 8 ରେ ବି ଅଛି, so don't confuse with it. For example, unit 8 हाँ देखो ଏଠି unit 8 ଏଠି ବି policy formulation ଅଛି, so but both are different ହେଲା. So leadership no question yet asked. Question ଟିକେ ଦେଖିଦେବା. Concept of motivation and moral. Herbert Simon's decision making. Communication broad stream. Motivation propounded by McGregor and Abraham Maslow. McGregor we have discussed in unit 2. Decision making, fact value dichotomy in decision making. Motivation, Hosberg theory of motivation, Maslow's need based motivation theory. So these are the previous year question, and yes, one question this time here. What role a effective communication play in building and maintaining strong employee relationship with an organization? So this question is mix of unit 2 and unit 4, and we can link unit 8 also here. So communication. Okay. So as we see, decision making, Herbert Simon, bounded rationality model of decision making, reject absolute rationality model propelled by Taylor, motivation, Maslow and Hosberg, Maslow, need hierarchy, Hosberg, two factor theory or dual unipolar trait theory, moral. There are 10 points we need to remember. 10 aspects of organization which can increase or decrease the morale of employees. So moral is very important, and motivation is one of them. Different from motivation result into moral. Okay. So these are the question asked from this unit. So leadership. Let's start with leadership. So no question asked from leadership. In future you might get, and policy formulation jota eta just remember classical versus behavioral model of public policy. Classical versus behavioral model of public policy. And decision making is a part of public policy. So you can say how classical, how behavioral approach towards decision making, that we can get policy formulation. This is classical way of policy formulation. This is behavioral way of policy formulation. So just you compare classical theories one side, behavioral theories one side, and this question, if this question come, I haven't found this question in either your OPSC or UPSC.
Hello, I haven't found, and OPSC hasn't asked any question. The reason is there is dedicated unit public policy. So I think OPSC neglect this question from this particular part policy formulation. But else other decision making, communication, motivation, moral already you have question. हाँ काली गोटे माने टॉपर तो ये डायलॉग माने एटा गोटे स्टेटमेंट सुनी दिबो that previous year question are bible सुनलो कि नहीं सुनी दिबो ओपीएससी टॉपर कहिछि previous year question it is like your bible ता अर्थ it is the key to your success जेतु जीएस रे हमर एथर चेंज हे जाइछि तो जीएस रो तो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाही गोटे वर्षर अछि जेतु लास्ट क्वेश्चन संग किछि संपर्क नाही बट यस ऑप्शनल इज देयर as it is so this previous year question this is key to your success and तमे देखो सबु वर्ष लास्ट ईयर भी जो माने मेंस देथिलो ए वर्ष भी जो माने मेंस देथिलो 17% क्वेश्चन तो आसुची ही आसुची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन yes or no लास्ट ईयर तो सब आसीतिला ए वर्ष किछि इनडायरेक्ट क्वेश्चन पचारिछि अदरवाइज पेपर 2 रे मोस्टली सो सब बेले मु बारंबार जो रिपीट करूछि कि इफ यू हैव कमांड ओवर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा कि मु कहूछि 2011 to 2022 हैला तो वी हैव टोटल 280 क्वेश्चन तो 280 क्वेश्चन ऊपर कमांड कर दियो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम टॉपर भी सही कहता है कहला समस्त से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर तुम्हारा कमांड होबा କଥା so I really give focus on previous year question discussion जहा पढिलो तापरे क्वेश्चन बिकॉज जोटा पढुछो सेटा सीधा रास्ता हैला एटा सीधा रास्ता दिस इज सिलेबस बट क्वेश्चन इज लाइक दिस हैला दिस इज क्वेश्चन बुझी पड़छो तो एटा सिलेबस वेरी स्ट्रेट जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन बट एटा हैला तमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ 50% जो अप्रोच कथा कहि दिली तो हाँ 1750 रु टॉपर रो मार्क होची हाँ इंडिविजुअल मार्क आसिलानी कि बट टॉपर रो 900 मार्क मेंस रे 1750 रु 900 भाव टॉपर रो तो आमे भी 1750 रो एपियर करिचु एंड दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम तो तमे एथिरु भाबो कि इंटरव्यू कट ऑफ केते जाई पारे टॉपर जदि 900 आणुची पुणी यूपीएससी रे ऑलरेडी सिलेक्टेड तो ओपीएससी रे केते जीवो कट ऑफ ओपीएससी रे सिलेबस फर्स्ट टाइम एंड द क्वेश्चन आर वेरी देखिचो जहा क्वेश्चन आसीची तो फिर भी मु कहली 50% माने अराउंड 800 800 होला ना नहीं नहीं फिर भी तुमरो जीएस चार्टा रहउची बहुत मैटर करिवो फोर जीएस माने भाबुचो डेफिनेटली तो जीएस रे मु हिसाब कोली माने 50%
देखो से आई कैनॉट से बट एतिकी अच्छी तो एटा केते 1250 तो गोटे पिला जीएस रे जदि तमे मिनिमम 100 एवरेज देखो एवरेज आउ एठी एवरेज तो एठी मिसी जे तमे 500 न आनुचो ना इट इज डिफिकल्ट एवरेज और ऑप्शनल रे एज आई सेड 280 पर बेड तो 280 मिसिले केते हला 780 780 आई थिंक क्वाइट माने इंटरव्यू कॉल हे जिवो 780 बहुत भलो मार्क 780 यदि यूपीएससी रे टॉपर 900 आणुची तो ओपीएससी रे 780 हाँ तो मु कहू नहीं 780 तमे मेंस रे आनो इंटरव्यू रे मिनिमम 120 900 रे यू गॉट थ्रू मते जहा लागुची कि आई कैन नॉट प्रेडिक्ट बट एटा गुटे मु तुमको रफ हिसाब कली कि एसए रे 100 एटा एवरेज एटा तमे कोटी 90 हबो कोटी 110 हबो कोटी 120 हबो बट एवरेज कहूची तो तो जीएस2 रे मु एक्सपेक्ट करची 130 प्लस मार्क भी आनी परिबो तमे आ जीएस1 जेमती हेची 110 मार्क बिकॉज ओडिसा एते देइनी जहार टिके आउटलुक अछि यू विल गेट एठी 110 एठी 100 छाड़ो 90 तो एमती हे कि 400 एसए रे 100 आनिबो 500 तो 500 500 प्लस जी भी 500 प्लस एठी आनिबो 500 और ऑप्शनल रे 280 780 you definitely got interview call definitely because it is very tough for gs2 रे at least ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ରଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଥର ହେଇଯିବ क्वेश्चन ଯେମିତି ଆସିଥିଲା because unprepared କେହି ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଏତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ନଥିଲେ no one expect that କି ଗଭର୍ନେନ୍ସ ର ଏତେ क्वेश्चन ଆସିବ ଖାଲି ଗଭର୍ନେନ୍ସ social justice that was unexpected तो एठी यदि तमे 130 एज ए प्रोबेड ऑप्शनल स्टूडेंट तमे यदि 130 140 कि 150 भी यदि तमे नहीं आसुजो ना इट विल बी गेम चेंजर देखो मु एबे जहा कहूची तमे यदि जीएस2 एंड ऑप्शनल ए दीटा ना तुमको सिलेक्ट करेबो ए दीटा ही तुमको सिलेक्ट करेबो आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनीथिंग बट ए वर्ष नेक्स्ट ईयर कोन क्वेश्चन हो गॉड नोस बट ए वर्ष रो क्वेश्चन हिसाब रे मु कहूची जे भी मेंस देइचो देखो जीएस2 और ऑप्शनल विल बी डिसाइडेड फैक्टर एंड जीएस2 रे आई होप यू विल डू बेटर सब ऑप्शनल से तमे कंपेयर कर दियो नो ऑप्शनल पिला यूपीएससी मेंस देइछन से माने भी सरकारी कमीशन लिखि पारि नाहंती हैला व्हिच वाज ए कंपल्सरी क्वेश्चन 20 मार्क बट यू पीपल डिटेल तमे लिखिथिबो सेथिरि तमे तो 12 तो आनिबो छाड़ो नेक्स्ट ईयर कोन हबो आमे जीवाने आमे एई वर्ष कथा कहबा अरे एई वर्ष सिलेक्ट हि जो भाबो तमरो निज ऊपर समस्त सेल्फ डाउट अछि मु जानुची एवरीवन इज डाउटिंग योरसेल्फ एवरीवन जे इंटरव्यू देछि से भी निज ऊपर डाउट करछि मोर इंटरव्यू कॉल हबो कि नै क्वाइट नेचुरल देखो सेटा भलो एमती नहीं कि तमे पूरा कॉन्फिडेंस रे हां मोर तो पक्का गारंटी आई विल बी इन द टॉप 10 ना सेटा खराब एवरीवन समस्त निज ऊपर डाउट करूछो जे भी मेंस देइछो स्पेशली हम क्लास रो प्रीलिम भी तो डाउट करथलो तो सेमिति हैला प्रीलिम भी डाउट करूथला प्रीलिम हैला एबे मेंस तो माने डाउट करछो मेंस कोन हबो मेंस हे जिवो इंटरव्यू रे भी डाउट करिवो होपफुली इंटरव्यू भी हे जिवो लास्ट को डाउट करी करी आपन सफलतार रहस्य कोन ना मु तो डाउट करथिले हबो नै बोली केमति केमति हे गला मु जानि नै मु तो प्रीलिम रे ही मोर डाउट थिला नेचुरल किछि नै सेतिर बड़ कथा किछि नहो
देखो सेल्फ डाउट रहिबो, इट इज नेचुरल, तो एवरीवन समस्त सेटा हुए। तो आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिस मीन्स नेक्स्ट मीन्स कथा कोन हबो, प्रिलिम कोन हबो। हां काली गोटे रिपोर्ट लास्ट ईयर 48 टा पिला जो माने सिलेक्ट हेतिले हिंदी माध्यम रे से भितरु यूपीएससी रे 8 टा पिला रे खाली प्रिलिम हेतिला भाबो, सिलेक्टेड पिलांकर प्रिलिम हेने। नहीं नहीं तमे दीटा जिनस देख, तमे हैला डाउट अछि ठीक अछि, तमे एवरीवन जो माने मेंस देइचो से माने देखो, जो माने आगु लास्ट ईयर सत्यव्रत कि बन्या तमे मेंस देइतिलो, तमे बाकी सब छाड़ो, तमे एसे केते आनितिलो देखो, तमे गोटे लागिबो कि हां एसे रे मो आसी पारिबो 100। तापर GS1 GS2 GS3 GS4 तमे गोटे रफ असेसमेंट करो कि कोन होई पारिबो। GS2 तमे 250 मार्क करिचो, एंड 250 मार्क रु आई होप तमे लिखिचो, माने कंटेंट दी जेंति गप लिखि नथिबो, तो 50% 130 तो आसीबा कथा मिनिमम मु कहूची। एज आई मु पढिची, वी हैव डिस्कस्ड, एंड 130 माने 50%, 250 रु 130 कथा कहूची। बाकी GS3 4 तमे देखो केमती करिचो, तो चलो 100 तो 100 मे बी 90, चलो 90 कर दियो, तो केते ही गला 90 90 भी करो, गुटे 3 100 400 ही गला, एटा 100 500 ही गला। मो मिनिमम कथा कहूची, बाकी तमे जे लिखि न किए तो आई एम नॉट रेस्पोंसिबल फॉर दैट। मु सेही मानकर कथा कहूची जे GS3 कंप्लीट सब आंसर लिखिची, GS4 कंप्लीट सब आंसर लिखिची, GS1 कंप्लीट, तो जे सब आंसर लिखिचो मु कहूची 90 मार्क आउट ऑफ 250, 90 मार्क। द रीजन बीइंग 12 आइटम से ST SC दिबो कैटेगरी थिबो ना, तो कैटेगरी रो किसी नंबर लिमिट नाही, 21 रु 35 की 37 जाए। हैला तो तमे एबे निजे कहो कि तमु कोन लागुची, बिकॉज़ इट स्पेशलाइज्ड जीएस कि GS2 हैला GS1 एंड क्वेश्चन केमदे आसीतिला, तो सेही हिसाब रे 90 मार्क, GS3 रे 90 मार्क, GS4 रे 90 मार्क, सेटा कहि होबोनी। आ ऑप्शनल रे एज मु कहली 50+1, 50+1 माने सबु क्वेश्चन रे जोड़ा 15 मार्क अछि तमे एवरेज 9, जोड़ा 20 मार्क अछि एवरेज 11, एति की मार्क। जब तुम एवरेज 50+1 आनिबो तो केतरा क्वेश्चन अछि, 15 टा क्वेश्चन, 10 नुआ 90, 11 पंचा 55, 5 14 145 290, आउ काटी दियो 10 मार्क 280। बिकॉज सुनो 20 मार्कर मु जहा देखी छी पेपर 2 रे तो अधिक आसीबो हैला, पेपर 2 जेमती क्वेश्चन आसीतिला मु श्योर 15 रु 10 आसी जिवो, एंड 20 रु 12 13 आसीबो जी माने पबेट 2, तो पबेट 2 रे समस्त मार्क बहुत बड़े आसीबो,
पॉबेट 1 रे जो दी तीन टा क्वेश्चन अछि मे बी सेथिरे आउट ऑफ 15 मे बी 7 8 भी देई पारंती 6 7 भी देई पारंती बट पेपर 2 रे यू विल डेफिनेटली स्कोर माने बहुत भलो आउट ऑफ 15 9 10 10 भी आसीबो 20 रु 12 13 भी देबे बिकॉज़ 20 रु 13 मिलुची and the way we have written the answer so 280 500 plus 280 780 780 रे मते तो लागुची इंटरव्यू कॉल पाइबो और इंटरव्यू रे मिनिमम 120 भी देले 900 रे होपफुली सिलेक्शन हे जिबा कथा ओपीएससी रे बाकी अगेन अनप्रेडिक्टेबल बट मु गोटे माने रफ हिसाब करूची लास्ट ईयर 1000 थिला इंटरव्यू कॉल लास्ट ईयर सिलेबस अलगा लास्ट ईयर मार्क भी अधिका थिला 2000 मार्क थिला 250 मार्क कमी जाईची लेट्स सी बट मु तो होपफुल समस्त इंटरव्यू दबो बोली ए वर्ष होपफुल हैला एंड मोर होपफुल हबार दीटा रीजन पॉबेट और जीएस2 एक्चुअली मु जीएस2 पई बेसी होपफुल कि यू पीपल हैव एन एज हैला तो मोर होपफुल हेबार रीजन होउची जीएस2 रे डेफिनेटली तमे 50 मार्क तो एज रे रहिबो आई एम वेरी मच श्योर माने पूरा जनता पूरा मास स्टूडेंट रो 50 मार्क एज रे रहिबो एंड जीएस1 एमती किछि नाही कि गोटे पिला एज नै जिवो जीएस1 की जीएस3 की जीएस4 रे तमे परीक्षा देइचो एमिति किछि नाही कि किए तमडु आकु अधिकार नै जिवो जीएस4 गोटे पिला जो पिला एथर यूपीएससी भी सिलेक्ट हिजने ताकू बसाओ जीएस4 ताकू झाड़ झाड़ बाहर जिवो जेमति जीएस4 क्वेश्चन आसीतिला because everyone prepared for case study no case study is there so no one has taken सेठी 5 10 5 10 एमती फरक पड़िबो देखो सेटा पुणी छाड़ कौन करदेवा कथा तो अलग कथा जमी गोटे पिला कहला ग्रुप रे कि जे ओपीएससी इंटरव्यू दउची ताको अन्य चाकरी दे देवा कथा अरे बाबू माने आर यू पॉलिसी मेकर मोर जेति की लेवल सेति की रे रहो तमे एबे मुख्यमंत्री हबो प्रधानमंत्री हबो तमे पॉलिसी बनेइबो एबे प्रीलिम रे फोकस करो एग्जाम रे फोकस करो कौन करबा कथा हां से गुटे अछि गुटे ज्ञानी हेवन एपियर प्रीलिम से प्रीलिम एपियर हेनी आज जाए किंतु माने हवाबाजी अलग लेवल रो प्रिपरेशन 2 मास ला स्टार्ट करिछि थिंकिंग इंटरव्यू गले ताकू चाकरी दे देवा कथा आ किछि हैला तो से हिसाब रे मु गुटे कैलकुलेशन करिछि कि हां आई एम होपफुल फॉर जे बी पॉपेट क्लास रो मेंस लेखिछो होपफुल कि मु माने दबो इंटरव्यू पॉबेट 2 रे तो छापी के आसीथिबो जहा जहा क्वेश्चन पडिथिला चीफ सेक्रेटरी हैला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैला जहा भी थिला आई हैवंट फाउंड ए सिंगल डिफिकल्ट क्वेश्चन इन पॉबेट 2 रे किछि डिफिकल्ट क्वेश्चन नथिला किछि माने तो पूरा बहुत से विथ सेकंड ईयर से करंट एग्जांपल दिया हिची पेपर 1 रे भी तमे माने बाकी मान तो फॉलो करथिबो एटलीस्ट यू तमे थ्योरीज देखि कि से तीन चारटा क्वेश्चन आसीथिबो बाकी माने सेटा भी लिखि नथिबे सो ए पैरामीटराइजेशन कमिशन रे मते लागुची कि यू पीपल एपियर इन इंटरव्यू चांस मु तो कहि परिबेनी गारंटी किछि नाही एठी हां तमरो पक्का सत्यव्रत गारंटी ना से सब नाही एठी किछि गारंटी नाही हां होपफुल एंड आई हैव some solid reason in order to be hopeful because this is the first mains
एंड भाव तुम मैंने भाग्य भी भल प्रिलिम बहुत भल भल पिला प्रिलिम है नहीं हाँ एथर देखो जहाँ प्रिलिम रे क्वेश्चन थिला माने सिलेक्टेड पिलांकर प्रिलिम है नहीं तो जे प्रिलिम मु पक्का कहार कहबिनी नेवर 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 मु कहार कहेनी बिकॉज इटा एते अनसर्टेनिटी मु खाली कहे हाँ देख दियो कहा कॉपी किए चेक कर जे रैंक 2 अच्छी ताठू कौन पिला भल आंसर लिखि नथिबे बिल्कुल लिखि दिबे बट आ कॉपी किए चेक कला ता कॉपी किए चेक कला इट इज अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिविटी सेही तो खेल हो जाउछि ना तम कॉपी ए चेक कला आउ का कॉपी बी चेक कला जीएस3 कौन जीएस3 तो करेंट अफेयर ही आसुछि देखो कौन माने ओडिसा रो तो छाड़ ए वर्ष तो क्वेश्चन आसी नाही बट मिलुछि सबु देखो से जहा जीएस 1 रे हाँ मिली जीवो जीएस पाई जीएस 1 टिके यू हैव टू पुट एफर्ट बट एमती किसी नाही कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी अच्छी ए वर्ष क्वेश्चन ठीक थिला नेक्स्ट ईयर कौन हबो गॉड नोस सो सेही पाई जी ए वर्ष सिलेक्ट हबो ना धरो ए वर्ष जे भी सिलेक्ट हैला किछि गारंटी नाही नेक्स्ट मेंस रे से सिलेक्ट हबो किछि गारंटी नाही sometimes some question favor you sometimes not favor you तो एमती नुह कि तुम ए वर्ष सिलेक्ट हो तुम गोटे किंग कंग हो गल तुम कह हाँ मु तो जेबे बस सिलेक्ट हेबी बिल्कुल नुह हो गल है तो किसी नहीं रिलैक्स रह पढ़ एंड काली एमती मु ग्रुप रे लिखी जो माने देखो इंटरव्यू जो माने भी मेंस देइचो एबे बहुत जगह इंटरव्यू क्लास स्टार्ट होउची मु बुझी पारुनी कोन से इंटरव्यू क्लास स्टार्ट होउची तो इंटरव्यू रे तमरो सेही जिंस ही पचारिबे तमरो ऑप्शनल रु तो रहिबो गारंटी 5 6 7 8 टा क्वेश्चन 50 नहले 30 टू 40 30 टू 50% क्वेश्चन ऑप्शनल रही रहिबो तमरो गारंटी प्रैक्टिकल पॉवेट पचारिबे से माने तुमको किछि भी पचारि पारंती पॉवेट रो किछि भी कंफर्म तापर न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर पढ़ो तमरो ऑप्शनल पढ़ो बाकी जो जीएस जेमती पढुचो पढ़ो जोटा जानि न कहिबो सॉरी सर I cannot able to recall right now एमती किसी नहीं कि यू आर सपोज टू आंसर ऑल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जोड़ा जानी ना कॉन्फिडेंटली सॉरी सर सॉरी सर यूपीएससी रे पिला 90% सॉरी सर कहि के भी मार्क आनंदी सेठी तमरो कॉन्फिडेंस देखाय तमे सॉरी सर डरी की कहूचो कि एकदम आखी टू आई कांटेक्ट करी कहूचो सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल सॉरी सर तापरे से माने स्विच कर देबे धरो तुमको हिस्ट्री उडे क्वेश्चन पे तुम जानिबो नै सॉरी सर अलगा एरिया रे पचारिबे एमती नुह कि एंड देयर आर सम फैक्चुअल क्वेश्चन और सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो कहि ही परिबो ना तमे नक्सलिज्म ऊपर हो टेररिज्म ऊपर हो इंटरनेशनल रिलेशन हो से इंटरनेशनल रिलेशन रे भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दुईटा अछि तो कॉन्सेप्ट तमे कहि परिबो जदि तमे प्रीवियस ईयर न्यूज़पेपर पढुचो एंड यू नो मेनी थिंग यू कैन टेल द कॉन्सेप्ट फैक्ट जदि जानि न गोटे पर्टिकुलर फैक्ट सॉरी सर
अब एबे जहा जहा होची तुमको जानिबा कथा दुबई रे जहा हला वर्षा क्लाउड सीडिंग कोन यू शुड नो तो जहा जहा होची इवेंट एबे बस्तर रे टेररिस्ट एनकाउंटर एई सब जिंस कोन इंटरव्यू रे पचारिबे तमरो बैकग्राउंड तमरो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आ करंट अफेयर आ तमरो ऑप्शनल करंट अफेयर देखो जनवरी रे पढ़ो प्रीलिम पई आगुरु पढ़ो ने हाँ हाँ देखो सफिशिएंट एमती किसी नहीं ओपीएससी करंट अफेयर पचारिबो नहीं तारो किसी नहीं बट तमे जनवरी रो पढ़ो जनवरी फरवरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर सेती की पढ़ो दैट आल्सो डिपेंड कि ओपीएससी रे तम को बोर्ड रे पढिची कोटा कॉन्सेप्चुअल बोर्ड कोटा फैक्चुअल बोर्ड सेटा तम हाथ रे नाही मु जेमती कहिली तमे 120 तमे हबो 120 मिलिबो ना ना सत्यव्रत इंटरव्यू कथा कहूची इंटरव्यू नॉट मेंस तमे भाबो 120 हैला एति की तमरो प्राप्य तमरो मजूरी 120 बाकी तमे एठी जहां आनी परिबो 680 आणुच 780 आणुच 880 आणुच एटा तम ऊपर एटा खाली 120 बाकी 120 रे तुमको 160 देले बट एति के माइंड रखी कि जाओ कि भाई 120 तो देबे मिनिमम बेस मु सेटा धरिबी घर को जीबी 120 जीबी आज जीबी बेस माइंड सेट बिल्कुल तमे पूरा प्रिपेयर हुआ बट तमे भाबो नहीं कि 160 मते देई देबे देबी पारंती हां देबी पारंती 120 बट तुमको मिलिबो तो जो माने मेंस देइचो जेमिति पढुतलो सेमिति पढो ना ना 120 बहुत तमे मुहरे कथा कहि पारुना बोल भाई बोल सेठी केमति मार्क आनिबो किछि कहि पडुवा कथा तमे हैला तो जे भी दबो जेमति ऑप्शनल चलुची ऑप्शनल पढुचो न्यूज़पेपर पढो एंड करंट इवेंट संग अपडेट रहो न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो जी जहार पारुचो देखो बट न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो एथिरे बहुत किछि मिले जोडा कि पेपर रे हिडन थाए माने कहंती सेति की देखो हे गला आ जी जहार ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ए डिपेंड कोन पचारिबे तमरो केमिस्ट्री अछि तो कहारो इंजीनियरिंग अछि कहारो कोन अछि सेटा मु कहि परिबे ने बाकी ओडिसा रे जहा होछि जानिचो very confidently जोटा न जानिले sorry sir I am not able to recall से माया रे तो सब चली छी ना सुनो जेते दिन जे बंचिच मोह माया रे बंचिबो जो दिन मल सरी गला देखुछ लोक कथा कहि पारुना इलेक्शन रे ठिया होजंती 80 वर्ष 85 वर्षर लोक इलेक्शन रे ठिया होजंती केबे मरि जेबे ठीक ठिकाना नाही आज गोटे बुढ़ा को टिकट मिलला ने बोली से पार्टी छाड़िबो कहूची जानिथिबो काहा कथा कहूची ताको लोकसभा एमपी टिकट मिलला ने बोली से कहूची पार्टी छाड़िबो के दिन बंचिबो लिबरेशन मिलिबो हिमालय पळै जाओ लिबरेशन मिलि जाओ मुख्य एठी मुख्य मिलिबो नै एठी तमे घरे रहइबो मां आपा संगे एठी मुख्य मिलिबो नै तुमको एठू छाड़ी की जीवा को पड़ेगा और ऋषिकेश रे बहुत आश्रम अछि जॉइन वन आश्रम बहुत बढ़िया जगह सेठी मुख्य मिलिबो आश्रम जॉइन कर दियो ऋषिकेश और
एठी मोक्ष मिलबनी ओडिसा रे रही हैला आ ऋषिकेश आश्रम को जाओ एड्रेस टा मते दबो मु भी केबे केबे गले रहिबे आश्रम रे हां मेटा मोटिवेशनल नीड ओके तो एमती प्रिपेयर करो yes so leadership let's discuss leadership I think Rishikesh is more good than Haridwar leadership so what is leadership one who one who lead in organization head of organization leader is different from boss leader is different from boss because leader is behavioral boss is classical leader always take responsibility boss always give order and avoid responsibility no तार भी अच्छी एते इजी नुह don't think that is easy I have experienced सेटा इजी नुह सेटा तुमको लागुची बहुत इजी बट ता पछरे भी बहुत अच्छी तमे 10 दिन कोठी की बुली की जाई की आसो तमे जानि परिबो कोन पेन अछि आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस 10 दिन बाहर रही होने देह खराब हो जाउची आ से माने वर्ष सारा बुलु जंदे एते इजी नो सत्य व्रत तमे 10 दिन बुली की आसो तापरे कहइबो हैला 10 दिन साउथ इंडिया जाई की बुली की आसो कि नॉर्थ बुली की जाई की आसो तापरे कहइबो हां बिकॉज़ मु भी आगरो भाबुतली बहुत इजी काम बट नो so leader or boss भितर डिफरेंस अछि कि leader who lead from the front who take responsibility who help his subordinate and boss is generally classical type he only give order he avoid responsibility he always blame worker for loss take credit but leader face criticism take responsibility for loss take responsibility for loss face criticism take responsibility for loss how shield worker protect worker but boss सबबेले blame worker leader सबबेले protect worker the classical theories promote which type of leadership positional leadership MP Follett
functional. Behavioral theories also support folate. Yeah. So we have classical type of positional authority, functional authority, behavioral type of authority, and we have yes, situational leadership. So positional leadership, functional leadership, behavioral leadership, and situational leadership based on the situation. So leadership theory promote three type of leadership. Leadership theory promote three type of leadership. Trait theory, behavioral theory, situational theory. Trait theory, behavioral theory, and situational theory, three type of leadership. Behavioral theory is individual no behavior or situation ଭିତରେ difference କ'ଣ ଅଛି behavioral theorist କହିଲେ कि the classical approach of leadership will not successful. The behavioral outwardly reject the classical idea of leadership. And they say कि our idea of leadership is, for example, employee centered behavior or uh, employee centric leadership, theory Y, those are successful. But situation कहले no, depending on a situation. Depending on a situation, there is no one best way. So depending on a situation, a particular type of leadership will be successful. Like experienced leader, knowledgeable leader. So situational theory different from behavioral theories. So individual behavior, it determine leadership. Situational theory said a particular situation. A particular situation determine leadership. Hello. So trait, behavioral, situational, and trait theory. It said quality or attribute in individual determine his leadership quality. Simple. Trait theory, behavioral theory, situational theory. Trait means if you have quality, you are a leader. Behavioral say, no, if you have this particular behavior, if you have this particular approach, you are a leader. Situational theory say, no, it depends on a situation. A situation determines whether you are a leader or not. You are a leader or not, it doesn't depend upon the quality, it doesn't depend on the behavior, it depends upon the situation. So got a particular situation you might be a good leader, but when the situation change tome galo. Acha, I can give you a good example. Functional leadership.
आम क्लास रे डिस्कशन करथिला फंक्शनल लीडरशिप यू नो मु कहिछि कि फंक्शनल माने one who is experienced in a particular function he should lead, yes or no? काली की परदिन पेपर रे आसीथिला हिंदू पेपर रे फ्रंट पेज रे कहि परिबो किए कि गुटे देयर वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फंक्शनल लीडरशिप मु देखिली सेटा मु भाबिली समस्त जानि पकेबे सेति में मु ताको कट करिकि देली नै बिकॉज़ मु बारंबार कहिछि नाउ टेल मी को न्यूज़ रे टेल मी द सिचुएशन सेठी पूरा माने इट इज प्रूव्ड दैट यस फंक्शनल लीडरशिप नॉट पोजिशनल लीडरशिप बट फंक्शनल लीडरशिप देखा जो पेपर पढुचो कि नै पेपर पढुचो केते इंटेंसिटी रे पढुचो मु देखिली मु जानिली दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शनल लीडरशिप बट मु एते कॉन्फिडेंट कि हां एटा समस्त जानि थिबे तो मु सो मु माने ताकू देली नै कोन एनीवन केही केही पढुना पेपर गुटे नक्सल अगेंस्ट ऑपरेशन हैला कॉम्बिंग ऑपरेशन एंड इन हिंदू फ्रंट पेज जनकर फोटो आसीतिला he was the hero in this operation he was specially called to lead this operation and he was a sub inspector Lakshman something तो से गुटे सब इंस्पेक्टर ही कि से लीड कला नक्सल ऑपरेशन where 29 नक्सल killed तो सीनियर ऑफिशियल थिले इंस्पेक्टर डीएसपी एसपी still he lead the operation have you read this or not कि गला परीक्षा सरला और किए हिंदू पढुचे हैला आज जाय कि पुणी थरे चेक करिवो that sub inspector lead the whole combing operation sub inspector example of functional leadership functional authority not positional authority because he is more skilled than other so he lead the particular operation केही पढुना पेपर अच्छा किछि कथा नै एटा इंटरव्यू रे पचारिबे who lead the Naxal operation in Bastar हाँ बस्तर कथा ही कहूचे मु आ कोडी नक्सल ऑपरेशन तो गोटे ही हेछि 3 दिन आगरो एटा माने मिस करूछो आ देखो जे भी कहजो ना प्रीलिम स्ट्रेटेजी मेन स्ट्रेटेजी हिंदू पढ़ो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हिंदू फॉर योर मेंस मेंस पाई हिंदू हिंदू एनालिसिस रो किछि सब्स्टिट्यूट नाही हां लक्ष्मण केवल सो तमे जीएस 3 रो बहुत आंसर तमे हिंदू पढ़ी की करि परिबो जीएस 1 रो भी किछि आंसर हिंदू पढ़ी करि परिबो यस यस दैट इज फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल दोछि हिंदू रो महात्मा हिट हिट स्ट्रोक जो एबे चली छी कि माने जो हिट वेव सो दैट इज आल्सो डिजास्टर फ्यूचर रे आ ऊपर क्वेश्चन आसी पारे हाउ टू टेकल फ्लड साइक्लोन सुनामी गला दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ डिजास्टर heat wave and majority part of India is under this heat wave situation so how to tackle this
এই প্রকার কোশ্চেন আসিব what step you take so that there should not be a second Bangalore type situation in India ଏଇଟା କୋଶ୍ଚେନ ଆସିବ ଆଉ ତମେ ଭାବ ନାହିଁ କି କୋଉ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ପଢିଦବ ଜିଏସ୍ ରେ କୋଉ ଗୋଟେ ବହି ପଢିଦବ ସେଇଠୁ କୋଶ୍ଚେନ ଆସିବ ତମେ ଛାପିଦବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦବ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦବ ତମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଦବ and as I said multi dimensional solution you have to give तो सीरियसली हिंदू पढ़ हिंदू एनालिसिस सुनो ଯାହାର ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଶଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ତ ବାଇଜୁର ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବଟ୍ ବାଇଜୁର ମତେ ଯାହାର ଭଲ ଲାଗେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀକୁ ତ ଏବେ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ବାକି ତମେ ଯାହାର ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଏନାଲିସିସ୍ ବଟ୍ ଇଂଲିଶରେ ଶୁଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଶୁଣିବନି ଇଂଲିଶ ଯୋଉଟା ଅଛି एनालिसिस सुनो घंटे टाइम दियो बहुत बहुत यू विल गेट ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड सेही टू तुमर आंसर हो ये पेपर जदि न भी पढ़ी पारुछ तो ठीक अछि न्यूज एनालिसिस सुनि दियो ओके सेटा करो तुमर जीएस 3 जीएस 1 रो किछि आ जीएस 2 रो भी गोटे दिटा क्वेश्चन प्रिपेयर trait theory of leadership it said quality determine a leader quality determine a leader and here we have two school great man school the quality to be a leader is present in individual by birth. So quality to be a leader present in individual by birth. जेमती कहा जाए तुलसी दुई पत्र रु बासे. Like that, if you have the quality of a leader by birth, then only you can be a leader. It cannot be acquired. So born leader. But in modern day it was found that many people are leader with no quality and many people have quality but they are not leader. आज डेट रे many people are leader बहुत लोक नेता देखुछ तमे से leader but तार क्वालिटी नाही बुझु दबो समस्ते I don't want to take anyone's name they don't have any quality but they are still leader but many people have quality बहुत लोगों पाखे क्वालिटी अच्छी बट से लीडर ना that is a deviation of this trait theory of leadership. So great man school modern rational school it said quality
to be a leader can be acquired. Quality to be a leader can be acquired. Like civil servant get training. After training, they become leader. So civil servant trained to be future leader. ହେଲା तो तुम भितर क्वालिटी थाउ न थाउ तुम ओएस पाइले तुमको ट्रेनिंग दिया जिवो एंड तुम लीडर हो जिवो ହେଲା मॉडर्न रैशनल स्कूल बिहेवियरल ग्रुप behavioral group of leadership. It said human behavior determine whether individual is a leader or not. Your behavior determine whether you are a leader or not. So in behavioral school of leadership we have many study and many thing माने जहाँ हमें बिहेवियरल थ्योरीज रे पढ़ी थिला अगेन से सब आसीबो लिकर्ट कथा जॉब सेंटर एम्प्लॉय सेंटर लीडर कथा that will again come here. So behavioral theory of leadership रे Michigan study रे two type of leader. There are two type of leader. One is job center leader. One is employee center leader. So which theory said this? Job center employee center leader employee center supervision हमें पढ़ी थिला जॉब सेंटर सुपरविजन एम्प्लॉय सेंटर सुपरविजन हैला तो एठी जॉब सेंटर लीडर मिचिगन स्टडी रे जॉब सेंटर लीडर इज क्लासिकल फोकस ऑन जॉब theory X type. Employee center behavioral focus on employee theory Y. Michigan study said employee center leadership will more successful than job center leadership. Okay, so you already सुनो जदि ए क्वेश्चन आसिला तो behavioral group of leadership heading दबो and if you forget Michigan study you just write because job center employee center already you know तो एटा तो मने रहिबो so you write job center and employee center leadership will be more successful than job center leadership. This is by Michigan study. Clear everyone? Behavioral रे तमरो behavior determine करिवो employee रो behavior
So at employer behavior, employee center, employee focus on the manager, focus on the employees, his need, his aspiration, his psychological need, social need. Second, Ohio study, Michigan study, Ohio study. Ohio study by FLEISHMAN. Ohio study re two factor, initiative structure, consideration. Initiative structure, initiative, a word ro buঝো, initiative, you take initiative to do something. Consideration, you consider something. So initiative structure re leader focus on work, work, not employee. Hello, initiative structure, leader focus on work. Consideration re leader focus on employee and work. So employee. Okay. So initiative structure, leader focus on work, consideration, leader focus on employee. So based on this, we have four type of leadership. Initiative structure, zero ରୁ এটা পড়েছি. This is consideration. ହେଲା ତ leader এটা ଗୋଟେ graph. Initiative structure এটা ବଢିଛି means leader ର ଏଇଠି leader is giving more importance to work, work and work, and leader is giving importance to employee. So a particular कौन होगा 1 2 3 4. This one is कौन initiative structure भी low, consideration भी low. जे बुझी न पारिबो पचारिबो. Here low consideration, low initiative structure. because it 0 ରୁ start ହେଇଛି ତ consideration ବି low, initiative structure ବି low. ଏଠି କଣ consideration low ହିଁ ରହିବ, low consideration but initiative structure कौन बढ़ी गला, high initiative structure. 3 रे consideration बढ़ी गला, high consideration but initiative structure low रहिला, low initiative structure. एठी high consideration, high initiative structure.
क्लियर। अच्छा, तो एबे तमे कह कि लीडर को प्रकार हवा कथा 1 2 3 4 जो थी कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी अधिका बढ़िबो। You know what is initiative structure? Focus on work, consideration, focus on employee. Now you share what should be a leader like. Yes, very good. Now you have understood the concept. So a leader with high initiative structure and high consideration will be successful because he give equal importance to both employee and work. Because he give equal importance to both employee and work. Okay, this is initiative structure, consideration, OYO study. Managerial grid by Black and Morton. MOUTN Morton माने Morton भाभी तो बने है Managerial grid by Black and Morton. It is nearly same as OYO study. Leader consider for job. Leader give importance to job. Leader consider for employee. Consider of for job, classical, behavioral. Leader consider or give importance to job. Leader give importance to employee. Okay. Consider for employee, and here consider for work. So as simple this particular 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 type of leader. First, low consideration for employee, low consideration for work. This is high consideration for work, low consideration for employee. This is high consideration for employee, low consideration for work. This is
high consideration for employee, high consideration for work, and this is middle of road, middle of the road माने किछि एम्प्लॉय पाई भी किछि वर्क पाई भी middle of the road. This particular leadership style is known as improvised. This is known as task oriented, means leader focus on task oriented. This is known as country club. This is known as team oriented. Improvised mane neither you as a leader, neither you give importance to work not the employee. Task oriented, this is classical type. You give importance to only work, neglect employee. कंट्री क्लब माने क्लब मजाक मस्ती चली तमे गोटे लीडर तमे कह छाड़ काम छाड़ भोजी भात डेली ऑफिस रे ताश कैरम लूडो चेस चली इवनिंग हेले फुटबॉल मैच क्रिकेट मैच है तमे गोटे कंट्री क्लब टाइप हाँ काम हम पछे खाली मस्ती चली एम्प्लॉय खुशी तुम ऊपर पूरा समस्त टेबल पर ग्रुप ग्रुप पर बस किए कैरम खेलला किए ताश खेलला किए लूडो खेलला एम्प्लॉय पूरा खुशी कंट्री क्लब. मिडल ऑफ द रोड तमे कहू हाँ काम टी कर दियो एम्प्लॉय को भी टिके देखि दउचो कि हाँ भलो अछु काम मिडल ऑफ द रोड. टीम ओरिएंटेड यू आर ए वेरी तमे कहू काम भी हम फुल एम्प्लॉय भी मोर भल से रहिबे तमे एम्प्लॉय को सब प्रकार सुविधा दउचो और कोन दरकार सर गरम होची हां चलो एसी लगे दियो सर टी ठंडा पानी दरकार हां फ्रिज गुड आनी के रखि देलो बुझो एम्प्लॉय को कहिलो तमे एसी लगे देली सकाळ 9टा रु पळे आसो दिन बेली खाइबा जीवा दरकार नै मु गुटे ऑफिस रे गुटे मेस व्यवस्था कर दोची 1000 टका दियो समस्त 1000 लेखा दियो बाकी पैसा मु देबी एठी गोटे कुक रहिबो नले ऑफिस रो पियन रोसई करिवो समस्त एठी एसी रे बसी के खाओ घर को जीवा दरकार नै सकाळ 9टा रु आसो खरा हेबा आगुरु हां व्यवस्था हां कैंटीन नथिले मेस गोटे गैस अरेंज करी कि पियन तम रोसई करिवो तो समस्त सेठी खाइबे तो लोक 9टा रु पळे आसीबे ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट कोन दरकार से माने तो 9टा रु आसीबे तमे को खरा हेबा आगुरु पळे आसो सकाळ 7टा रु पळे आसो तमे एम्प्लॉय को मोटिवेट करिवो देखो काई खरा रहिबो सकाळ 7टा रु पळे आसो ने एडे टे अधिका हे गला कार दी होबो ने हां एसी बस उठे करी होबो एसी बस जीवो समस्त को ता घर नै के आसीबो कार टा अधिका हे गला सेरा पुनी कंट्री क्लब हे जीवो तमे एम्प्लॉय जहा मागिले देलो एम्प्लॉय को ठंडा पानी दिया हैला एम्प्लॉय को चा दिया हैला तापर एम्प्लॉय कहबा आगे कमल लगांतु सोइबु तमे तापर गदी पकेइबो ना सेटा हेले पुनी कंट्री क्लब हे गला तमे एम्प्लॉय को कहिलो कि तमरो जहा असुविधा अछि कहो बट मते काम दरकार हैला जेमति वन ऑफ माय फ्रेंड से गोटे पॉवर्ड ऑप्शनल पिला से तहसीलदार थिला बेले से कोन करे तर काम पेंडिंग हैला तो इवनिंग रे समस्त को कहि देबो के जाई परिबो नाही लोक 5टा रु जीवा स्टार्ट करिवे से 7टा 8टा जाय रखिबो समस्त को इवनिंग रे खाइबा व्यवस्था करिवो चा जलखिया व्यवस्था करिवो आ सब एम्प्लॉय कहबो देखो मु भी जीबी नै तमे भी जाई परिबो नाही हैला वी हैव टू डू वर्क आ जदी न होउची तो मु सैलरी समस्तकर बंद कर देबी मोर भी बंद तमरो भी बंद मु पठेबी ही नहीं सैलरी
तहसीलदार लिखिकी पठेले ही सैलरी आसीबो फाइनल। तो से कहबो मु पठेबे नहीं, न पठेले सैलरी आसीबो नहीं, तमे देखो कोन करिवो ना, मोर आसीबो ना तमरो भी आसीबो। तो एठी कोन हैला कि यू गिव इंपोर्टेंस टू वर्क, कि तमे कहबो कि सैलरी बंद, एम्प्लॉय बाध्य सैलरी बंद हो जिवो, से डरी कि तो लोक राति रे घर को जिवे नहीं, कहबे ना सर हम घर को जे एट सोइबो। एंड तमे कहले एक्स्ट्रा जो काम करूचो, एक्स्ट्रा काम करि दियो, ये मासे कि जेते अछि वर्कलॉग सरी गला परे, तापरे तमे दिन गोटे रे पळेले भी चलिबो। तो एठी कोन तमे एम्प्लॉय को भी कंसीडर करलो, तमे तांगर चाह जळखिया व्यवस्था करलो, तापरे काम सरला परे को एम्प्लॉय केतबेले हाफ डे करला, ओके ठीक अछि जा काम नाही, जदि काम अछि तो यू हैव टू स्टे एट 8, जदि काम नाही जणे दिन 2टा रे भी जाउची जाओ, इफ ही हैज सर्टेन वर्क। तो सेटा होची टीम ओरिएंटेड लीडर। ये बुझी पारलो, टास्क ओरिएंटेड खाली टास्क करेबो, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय मरि जाओ तमर परवा नाही, कंट्री जॉब खाली मस्ती भोजी भात। अच्छा, so what do you think, which type of leadership will be more successful? Who is most successful? That a situation I have given you. Yes, team oriented leadership most successful. Okay, after that, authoritarian and democratic by Tenenbaum. Authoritarian and democratic by Tenenbaum and Summit. Authoritarian leadership, democratic leadership. Authoritarian is classical, democratic is behavior. Based on these parameter, there are 4 types of leadership. Based on these 2 parameters, authoritarian leadership, there are 4 types of leadership. Authoritarian, democratic, tells, sells, consult, co-join. So tells, highly authoritarian,
Clear everyone? One, it is highly authoritarian. Tells माने superior सबबड़े कहबो employee को कि कोन करबा कथा. Tells type leadership. तापरे cells less authoritarian than tells. Consult leader, consult employee before taking any decision, and co-join. Democratic leadership. Democratic leadership. Employee and leader both take decision in organization. Okay, consult, co-join. So, what do you think? Who will be successful? 1, 2, 3, 4. Yes, as it is more democratic in nature. 5. Likkert's 4 system. We already discussed this in Likert. Behavioral approach. System 1, system 2, system 3, system 4. Authoritative, exploitative, value system, benevolent, authoritative, consultative, democratic, participative. Likkert's 4 type of system, 4 type of leadership, and we all know that system 4, that is democratic, participative leadership style will be successful. Democratic participative leadership style will be successful. Okay, system 4. Iowa study by Part Lewin. He said there are 3 types of leader. Authoritative, democratic, laissez-faire. This is authoritative.
आई थिंक एरो रे बुझी जीवा कथा तमे कि काहे कि अथॉरिटेटिव एंड काहे कि डेमोक्रेटिक. Can you get it? This is authoritative, democratic. For example, A connect with B, C, D, ଆଉ E. ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ connect and ଯେତେବେଳେ arrow one sided ହବ ନା one side communication. This is two side communication. So one is top down communication, one is top down and bottom up circular communication. So ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ communicate କରି ପାରିବେ. This connect with this connect with this. Getting it? So authoritarian, democratic. Laissez-faire कौन हबो? Suppose this is leader. Leader ए दुइटा में से connect ହେଇଛି एठी आउ दुई लोक. So leader is not connect with this group of people and this group of people. Laissez-faire, free. So what do you think? Which will be successful? Authoritarian leadership, democratic leadership, or laissez-faire successful? তিনটা সিচুয়েশন দিলি. Authoritarian, one side communication. Democratic, এটা লিডর ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ communicate କରୁଛି. ସମସ୍ତେ leader ସାଙ୍ଗେ communicate କରୁଛନ୍ତି. Yes. So democratic type will be successful. Leadership style will be successful. କିଛି difficult ଅଛି? କିଛି difficult ନାହିଁ. Because already you know what is authoritarian, what is democratic. Liquid already ଜାଣିଛ, job center, employee center ଜାଣିଛ. Initiative structure consideration for employee, consideration for work. ବେଶ ହେଇଗଲା তোমার ଗୋଟେ answer. Hello. So this is behavioral type of leadership. Tomorrow we will discuss situational or contingency approach of leadership. Okay, situational or contingency approach of leadership we will discuss tomorrow. It will take a time lagibo because concept बहुत अच्छी. LPC, low on LPC, high on LPC. It is अच्छी concept. ହେଲା तो you will go through जहाँ माने behavioral रो जहाँ हमें पढ़ेला सबू देखी जाउतबो and जहाँ मु लेखुची तमे लेखो it is your note. देखो मु note dictate करिवि नाही जहाँ मु लेखिबि because I am writing everything. Dictate करिवाटा बहुत easy. धरिली डाकिली ना से सब नाही तमे जहाँ लेखुची एबे लेखो otherwise क्लास रे तमे पूरा फोकस करके सुनो क्लास परे आउ थरे बाहर कराओ लेखो what you will write तमे जेते थोर लिखिबो ना थोरे क्लास रे देखो ताको पुणी लेखो लेखिला बेले तमको जो डाउट लागिबो पुणी पचारो मल्टीपल रिवीजन क्लास रे थोरे पढिलो सेकंड तमे लिखिलो सेकंड रिवीजन थर्ड आउ थोरे देखि दबो थर्ड रिवीजन जेतोळे हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करियो फोर्थ रिवीजन तो तमरो साइमल्टेनियसली चार थर रिवीजन हबो तापर जेमति मु कहू संडे दिन पुणी स्टार्टिंग रो सब पढि दबो पांच थर रिवीजन तो बारंबार बारंबार पढ़िले जाई मेंस टाइम रे सुनो एमती नो कि मेंस मासे आगु पढ़ा स्टार्ट कर देबो किंग कॉन्ग हे जबो ना हैला बहुत बड़ गछ अछि तमे
टिके 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 मारुछ पूरे दिल्ली स्कूल रे बहुत बढ़िया लिखा हैतिला हैला अगर तुमको एक महीने का खाना एक दिन में दिया जाए तो क्या खा पाओगे बहुत मु बहुत इंप्रेस हैतिली पूरे एग्जाम दे जाइतिली से स्कूल रे लिखा हैतिला हाईली इंप्रेसिव अगर तुमको एक महीने का खाना एक दिन में दिया जाए तो क्या खा पाओगे तो एक महीने की पढ़ाई एक दिन में कैसे करोगे बुझलो एक साल का पढ़ाई एक महीने में कैसे करोगे एक साल का पढ़ाई प्रीलिम रिजल्ट आने के बाद 2 महीने में कैसे करोगे इम्पॉसिबल तो जेमिति सबुदिन खाऊच बंचिबा पई सेमिति सबुदिन पढ़िया को पड़िबो परीक्षा पई एमती नहीं कि सीजन आसी नहीं प्रीलिम रिजल्ट आसीबो तापर स्टार्ट करिवि प्रीलिम पर स्टार्ट करिवि ना मते मो सेति में आज भूली नहीं जदि तमे गोटे मासर खाइबाटा दिने खाई परिबो नाही तो एते पाठ केमती मासे के पढ़ी दबो परीक्षा को केमती पढ़ी दबो असंभव तो सेति पई एमती से जेमती कोन काठ हणा चढ़ई थंडरे मारी 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 काठ कणा कर दिए सेमिति तुमको भी एवरी डे इट इज ए माने लॉन्ग प्रोसेस कंटीन्यूअस प्रोसेस एबे स्लम्बर को पड़ेबो से भालू जेमती पोलार बियर सोइला भलिया आउ परे उठिबो हां आसु प्रिलिम सरू पढ़िबा तो कोविड जो वे रे कहूची मु 300 400 रिवीजन यो मल्टीपल रिवीजन 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 तो जेतेबे तमर मेंस आसीबो आउ कोविड तम पे हेडेक रहइबो नै स्ट्रेट जीव आंसर लिखिबो हैला बस तो हम सब दिन पढ़िबा सब दिन रिवीजन and it will continue okay so meet you tomorrow we will discuss situational and contingency approach and policy formulation ठीक अछि so good night everyone meet you tomorrow